I want to bring in Amitabh Tiwari. Okay, but before I bring in Amitabh Tiwari, Anila ji, I want to go back to Ghanshyam Tiwari wants to come in. Ghanshyam Tiwari and Surendra Rajput ji. The point is very clear, which Anila Singh is saying, that they don't need to. BJP doesn't need to float any rumors. You are doing it to yourself. Every week, you have your own, one of your own alliance partners comes up and says that they're doing it, going it alone or leaving the alliance. Ghanshyam Tiwari. I have a very brief point. The difference between India Alliance, which is an alliance of equal partners, and NDA, which should actually be called NSA, which should stand for Narendra Surrender Alliance, that you have to surrender to Mr. Narendra and then you are part of that alliance, whether you are Nitish Kumar ji, whether you are RLD, whether you are any other party, whether you are Ajit Pawar, or whether you are Mr. Shinde. So the fight is between this Narendra Surrender Alliance and India Alliance that has to be a partnership among equals. And the criticism is fair, and I think the party leaders are watching this criticism. And as a result, I believe the alliance... Ghanshyam Tiwari, after a very long time, you've come on my debate completely disillusioned with your own alliance. But I'm not disillusioned. I'm just saying you seem very disillusioned, sir. You've been one of the people who will come and fight it out, but you look very disillusioned with your own alliance. Rajput ji, you want to add to it? And I'll just bring in Amitabh Tiwari into this conversation and go back to Anila Singh. जी हाँ, बड़ी छोटी छोटी सी दो तीन बातें कह रहा हूँ प्रीति। मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा अनिला जी ने, वो हमारे पीछे रह भी नहीं सकते। वो क्यों बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, भाजपा वाले या कांग्रेस की, क्यों करेंगे? उन्हें तो किसान को बर्बाद करने से फुर्सत नहीं है, उन्हें बेरोजगार को बर्बाद करने से फुर्सत नहीं है, उन्हें जो है चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन लोकतंत्र को लूटने से फुर्सत नहीं है, जो आज सुप्रीम, उन्हें इलेक्टरल बॉन्ड के जरिए रुपए इकट्ठे करने से, लूट की छूट से फुर्सत नहीं है। वो हमारे पीछे कहां पड़ेंगे? हमारे पीछे तो उन्होंने ईडी, सीडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लगा रखा है, और उसके जरिए ये लोग जो करेंगे वो आपके सामने। हम एक बात बता दें, हम जनता के निर्देश में और जनता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आज की डेट में जो शख्स भी नीतीश कुमार बनेगा, जो शख्स भी जयंत चौधरी बनेगा, वो शख्स को जनता बिल्कुल माफ नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव मुद्दों पर होगा, नाम पर नहीं होगा। सुरेंद्र राजपूत जी, मतलब आपके पीछे तो आपके ही पड़े हैं ना, बात तो ये भी है। अनिला सिंह, प्लीज कम इन फॉर अ rebuttal and I'll bring in Amitabh Tiwari for a larger context on what it will look like if Samajwadi Party and Congress go it alone in UP. Anila, you wanted to come in, ma'am. Go ahead. Yeah, absolutely. सुरेंद्र जी को मैं याद दिलाना चाहूंगी, सुरेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के रजीम में नहीं, आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तब ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि सीबीआई क्या है, पिंजरे का तोता। अभी तो नहीं कहा ना, सिंस नरेंद्र मोदी जी हैज कम इन पावर, we have not been termed like that. So please do not try to insult or humiliate these agencies. They are doing their work. अगर आप लोगों का गिरेबान बिल्कुल, आप लोगों का दामन बिल्कुल साफ है, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। You shouldn't be scared of CBI, ED or any of the investigative agencies. आप कुछ गलत करेंगे तभी तो आप डरेंगे ना जी। ये कौन सा तरीका होता है? And secondly, Preeti, as you asked me, if Akhilesh Yadav ji's party and Rahul Gandhi ji's party, if they go solo in Uttar Pradesh, how we are going to benefit? No, ma'am, I'm asking Amitabh Tiwari ji, but you are free to answer. Go ahead, ma'am. Even if they come together, then also Bharatiya Janata Party and our allied partners, NDA family, is going to benefit, because we know it very well. UP is one state which is going to vote for NDA family to Bharatiya Janata Party. We have double engine ki sarkar, Modi and Yogi. All right. I want to bring in Amitabh Tiwari right now into this conversation. Amitabh Tiwari, for a man of numbers and an astute political analyst, to break it down of what the political landscape UP looks like. If the Samajwadi Party and the Congress alliance doesn't work out, what does it look for the India alliance, which clearly is on paper if this doesn't work out? See, in 2014, all the parties in UP contested independently. Samajwadi Party, Bahujan Samaj Party, Congress and the BJP-led alliance. So then it reverts back largely to the 2014 scene, when the NDA won 74, the Samajwadi Party 5, and the Congress, I think, won 2 seats or 1 seat at that point of time. However, the context is also different in the sense that there was no Ram Mandir inauguration at that point of time. And the opposition, or at that point of time, the party in power, was not
that disarray compared to what it is currently. Because as you said, India bloc is now reduced to the UPA era, because there were additionally 5 states where India bloc would have made a difference: West Bengal, Punjab, Delhi, UP, and Maharashtra and Bihar. But in most of the states now that the alliance has fallen off, and now all these individual parties cater to different blocks, like the Samajwadi Party largely to the MY and lower OBCs, the Congress does not have a lot of vote share left, and the BSP largely to the Jatos or the Dalits. The BJP or the NDA bloc has the largest social coalition in UP in terms of the upper caste, the non-Yadav OBCs, and the non-Jatas, which comprise largely of 55 to 65% of the population. So it's a very strong alliance. And the Samajwadi Party has offered a good deal to the Congress Party in terms of 17 seats with a 6.4% vote share in 2019 and only 2 seats in 2022 Vidhan Sabha elections. However, the problem is that in the Congress Party, who will decide is the question mark, I think. Whether it is the Congress president will decide, whether because the Gandhis contest from UP, they will decide, or somebody else will decide. So I think they are playing the game of passing the parcel among सुरेंद्र राजपूत, दिक्कत यही है आपकी, जो एक सीट थी पहले 2019 में, एक सीट वाली पार्टी को 17 सीट दे रहा है ये अलायंस, पर डिसीजन नहीं आ पा रहा है. क्या प्रॉब्लम है? कुछ समस्याएं हैं, हम स्वीकार करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं. अमिताभ जी के सामने भी और आपके सामने भी. हमें ईमानदारी से, हम राजनीति में बेवजह की बेईमानी पर भरोसा नहीं रखते, लेकिन हम एक चीज बताते हैं आपसे, बहुत क्लियर कट है कि यहाँ पर कमिटमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें मिलकर के लड़ना है. कौन सी सीट कौन लड़ेगा यह बड़ा इश्यू नहीं है. इट्स अ मैटर ऑफ आवर्स ओनली. आई विल कोट यू ऑफिशियली एट दिस मोमेंट कि ये कुछ घंटों की बात है, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. सीट शेयरिंग का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. कुछ जगहों का थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे, कौन कौन से वाली सीट लड़ेगा ये बात जरूर आ रही है. मुरादाबाद उनमें से एक है, पर चलिए जी. नहीं, मैं आपसे यहाँ पर एक छोटी सी बात कह रहा हूँ. हमारे लिए तो सारी की सारी बातें आ रही हैं प्रीति, लेकिन आपने कभी देखा होगा कि कहते हैं ना कि जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी. अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे. भाई आप मुझे बताइए, इनके यहाँ उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, इनके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के, अब अपना दल कितनी सीट लड़ेगा, निषाद पार्टी कितनी सीट लड़ेगी, ओम प्रकाश राजभर जी कितनी सीट लड़ेंगे. पर अपना दल तो 2 ही लड़ेगी. इनका जो ट्रेडिशनल अलायंस है वो कंटिन्यू होएगा. अनिला जी कितनी सीट लड़ेंगे ये बताएंगे आपको. मैं आपसे जी हमारे यहाँ पे आज की डेट में. अच्छा चलिए, सुरेंद्र राजपूत जी, अनिला जी को बोलने दीजिएगा. अनिला जी बोलिए. सुरेंद्र जी, हमारे एनडीए परिवार अभी नहीं बना. ये जो इंडिया अलायंस बना है, ये नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए बनाया गया था ना. ये एनडीए को हराने के लिए बनाया गया था. आप लोगों का तो यूपीए था, और अब हम समाजवादी पार्टी का सुनते हैं पीडीए. तो कोई यूपीए कोई पीडीए आप लोगों ने मिलकर बनाया इंडिया अलायंस की. हम नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे, पर हराएंगे कहाँ. Okay, I want to end the show. I want to bring in Ghanshyam Tiwari ji for 20 seconds. Ghanshyam Tiwari, the question is of what Surendra Rajput said. Officially he's saying ये कुछ घंटे की बात है. Do you believe कि कुछ घंटे में सीट शेयरिंग हो जाएगी, या आपको विश्वास नहीं है? Well, I think if he's quoting official sources, he's probably more informed on this. But the reality is that if BJP is so strong that it doesn't care about firing on farmers through drones, it doesn't care about paper leaks when 60 lakh, 70 lakh students are writing an exam, then that sense of strength. Today let's go back to what the All right, today let's get back to what the debate is, and that is that will there be seat sharing between the Samajwadi Party and the Congress in Uttar Pradesh? Well, in every other state, that alliance seems to have fallen out. The Samajwadi Party and the Congress alliance is possibly the only one which is standing put where the India alliance is concerned. But Surendra Rajput tells us it's only a matter of few hours. We'll figure out, appreciating all our panelists for joining.